Welcome to Learn Shorthand Typing with Vikas sir. The Hindu editorial dictation heading is Staying the Course. स्टूडेंट्स ये आपकी आरबीआई को लेकर ये आर्टिकल है जो इन्फ्लेशन है उसी के ये आर्टिकल है काफी अच्छा आर्टिकल है स्टूडेंट्स ये द हिंदू एडिटोरियल की डिक्टेशन जो आपकी एसएससी हो या आपका हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट कोर्ट हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि न्यू मैटर्स है और आपके न्यू वर्ड्स आएंगे और हर रोज आपकी डेली की डेली हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है ये जो डिक्टेशन है सो आप जो हिंदू की एडिटोरियल की डिक्टेशन से ही शुरुआत करें मॉर्निंग में सो बी रेडी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी स्टार्ट The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, in its latest bi-monthly review, has decided to maintain status quo on the benchmark interest rate of 6.5 6.50 for the 11th consecutive time. As the panel's chairman, RBI Governor Saktikant Das emphasized the last mile of disinflation is turning out to be prolonged and arduous for emerging and developed economies. India's retail inflation, after trending below the median 4% target for the first time in 5 years, for 2 months spiked over September and October, with food prices leading the price pinch. As at its October meet, the six-member MPC had voted 5.1 to hold interest rate, stating the inflation growth balance was well poised, that poise has been settled, with the economic ground shifting dramatically in the intervening period while inflation has surged. The deleterious growth numbers for the second quarter have compounded the mix, with GDP rising just 5.44% as opposed to the 7% estimated by the RBI. The government has sought to paint the growth blip as a transient occurrence rather than as a sign of an enduring slowdown, but ministers had called for interest rate cuts from Main Street even before the GDP print. It is perhaps not a surprise then that the vote of the MPC, which includes three external members, on holding interest rates this time around has changed to 4.2. Governor Das acknowledged that the near term inflation and growth outcomes have turned somewhat adverse. He also effectively
scourged the clamor for the MPC to look through food inflation, noting that the RBI is bound by the flexible inflation targeting framework laid down in the law that requires headline inflation to be addressed. The central bank's mandate is to maintain price stability while supporting growth, but growth is also impacted by persistently high inflation that cramps households' spending power, as he pointed out, and this is already visible in urban spends. Both the trajectories warrant closer monitoring for now, and it is not as if a 0.25 percentage point rate cut would tangibly shift consumption or investment impulses in the short run. The RBI remains hopeful of GDP growth recovering and inflation cooling in the second half of the year, even as it revised its 2024-25 projections for the former to 6.6 percentage from 7.2% and for the latter to 4.8% from 4.5%. Some consider even these downgraded projections as optimistic, but if the center takes some fresh steps to cool prices, such as rolling back the import duty hike on edible oils and spur consumption, it would be able to hasten the interest rate cuts it desires. Full stop. स्टूडेंट्स, अब हम जो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी उसी को हम देखेंगे. अब एक यहाँ पे वर्ड था आर्डुअस, ये, हाँ जी. अब आर्डुअस को अब आर्डुअस को क्या बोल सकते हैं हम? आर्डुअस का मीनिंग क्या होता है? जील, एंथुजियास्टिक, फरवेयर भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, पैशन भी बोल सकते हैं. ओके, और इसको ईगरनेस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे नीचे है स्पाइक, स्पाइक्ड. स्पाइक वर्ड का हमें यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? पेनिट्रेट भी बोल सकते हैं, स्टैब भी बोल सकते हैं, रन थ्रू भी, और स्टिक भी बोल सकते हैं इसको. उसके बाद एक नीचे वर्ड है डेलिट्रियस. डेलिट्रियस कॉमन सा वर्ड है, आप देख सकते हो. अगर जिस बच्चे को पता है डेलिट्रियस का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, डेलिट्रियस का मीनिंग यहाँ पे होता है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, अनफॉर्चुनेट, परनीसियस. ये आपके मीनिंग होते हैं. परनीसियस की स्पेलिंग क्या होगी? PERNICIOUS. ठीक है. और ये एक वर्ड आपका अनफॉर्चुनेट. अनफॉर्चुनेट काफी बार आ जाता है, क्विज में भी आ जाता है ये. इसको देख लेते हैं, देख लेना आप. ओके. एक वर्ड है आपका क्लैमोर, लास्ट में ये है आपका क्लैमोर वर्ड. यहाँ पे ऊपर ही था ये क्लैमोर वर्ड. चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ. क्लैमोर को क्या बोलेंगे? बे, सॉरी, यहाँ पे हम इसको BAY, बे भी बोल सकते हैं, इसको यल भी बोल सकते हैं. ये आपका प्रीवियस ईयर का
प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है ये आपका क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। उसके बाद ये आपका डिमांड भी बोल सकते हैं इसको, DEMAND, डिमांड भी बोल सकते हैं, या इसको हम कॉल भी बोल सकते हैं, CALL। ओके, ये आपके फॉरवर्ड्स थे, सिर्फ आप इसको नोट डाउन कीजिए। हर रोज आपका डेली की डेली आपको न्यू वर्ड्स की प्रैक्टिस होती रहेगी, और प्लस इसमें आपकी मीनिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। सो इसको आप लिखिए और इसको टाइप कीजिए। थैंक यू।